is an honor for me to explain or whatever I know about this, to say something on this topic. My topic today is the Madina Charter, or popularly in Urdu it is known as Arabic mesak-e-madina. Mesak-e-madina, what basically this Dr. Hamidullah Sahib, because it is a review lecture. What mesak-e-madina has, it is the universal document accepted by all religious groups. इसमें किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं है, whether they are Europeans, whether they are people from the ancient Arabic literature, Arabic world, or people who don't belong to the faith, Muslim faith. तो जो भी इसमें, जिन्होंने भी इसको पढ़ा है, they have accepted as first and historical document of the world. And Hamidullah Sahib has written that it is the first written constitution of the world, an important document of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This document has given the concept of a statehood, what the statehood is. It has given word the concept of that, because it is based on the constitution, it is based on the rules and laws, rights and duties of the citizen, rights and duties of every individual, and also the rules which are governing which are from the administrative side, which are governing the public or the masses. So here every bit of the information, everything is written over in this. What are the obligations, what are the duties, what are the rights, everything is written over there, and individual. So it gave the through this document, the Madina gave world a concept of statehood, concept of the civilized nation, and also the first document which was not in existence before that. And this is, he has said, Hamidullah Sahib has said, this is in the written form. Written form means before that, nations, every civilized nation or other nation, they were governed by the rules and regulations, but they were not in the written form. Everything was there, but this is the first document which is in the written form. According to him, written the rules and regulations, when they come into writing, they form a book, and when they form a book which is in Arabic known as kitab or sahifa, because we find in this document these two words. It is a kitab or it is in Arabic as a sahifa. That means it is in the written form, and it is written with the authenticity. It is a sahifa. So he has explained that, and also the first constitution. First constitution means he has given us the example of Aristotle's time. He has given the example, and Aristotle has described that he has seen 150 constitutions of the world of various cities and states, city-states of the countries, including India. He has also mentioned, and it was the time when his time was from time was from 384 to 322 BC. At that time, there were some constitutions. He has mentioned 150, but he has mentioned there only one. It has been written that only one constitution of that Greece, there is a place, Athens. The constitution of Athens has been found in the Egypt, and it has been translated into English, and it has been published in only 1891. Before that, in the recent in our past, we see the Human Rights Charter and everything. Those are of very recent origin. Only that this Human Rights Charter, it was it is from 1945, and similarly the oldest of
is the UK Magna Carta. It came into existence in 1215. So these are, we have documents, but these are of recent origin. Only this document, this first document, it is so old, and where everything is written, and this has given us the way how the people will live. People should live with a dignified life, and what are their duties and what are their rights. This is mentioned in this document. Hamidullah Sahib has justified its being the first document, and he has given the references, and he has also given the reference. It is written because in document itself it is written that it is a kitab. Kitab means in the written form. I will show the slides after that. First I will give the introduction of this, and also this whole document of Hamidullah Sahib, he has given he has used the main two sources of references. One is the book of the great historian of Prophet His name is Ibn Ishaq, and another is Abu Ubaid. When we see has given the reference of these two people, but Ibn Ubaid was there as a great historian. He was at the time of the 1st century Hijri, and his full name was Abu Bakr Muhammad bin Isa, and the second one is Abu Ubaid. His full name is Abu Ubaid Bikri, and he was in 5th century Hijri. They have the first one who is the Madini, who is from Madina itself, Ibn Ishaq. He has documented this document. He has given details bit by bit. He has given because he was the first person to give the details. So this document of Dr. Hamidullah is based on these two main sources besides the Siratul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. He has quoted some books which are authentic. So on these, this is the authenticity of this document. According to this document, in 1st Hijri, this was documented. This was made a sort of contract. This was made in 1st Hijri between the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam and the various ethnic groups of Madina. मदीना के लोगों के बीच में ये हुआ था, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर Hamidullah Sahib ने he has mentioned that before discussing this document we will see how it was written. ये बनाया क्यों गया है और इसके पीछे जो historical background है वो क्या है. उन्होंने वो दे दिया है in words में. When Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam he started preaching and reformative work in the holy city of Makkah. जब उन पर वही नाजिल हुई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने जो मक्का शरीफ में जो तबलीग का काम शुरू किया, इस्लाम को फैलाने का काम शुरू किया, he was not welcomed by his own people. तो वहाँ पर they didn't spare any opportunity, any time to insult him. उन्होंने उनको इतना टॉर्चर किया कि they were not ready to accept those beliefs. उनके लिए वो नए beliefs थे, नया मजहब था. उन्होंने कहा कि हम अपने जो आबाओ अजदाद हमारे थे उनका जो मजहब था we will not leave that. हम उसको नहीं छोड़ेंगे. हमें ये accept नहीं था. And Hamidullah Sahib has written over here there was a reason. उन्होंने कुछ reason दिया है. उन्होंने ये कहा कि Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam he was belonging to the Quraysh tribe. Quraysh tribe बहुत ही respectable कबीला था, but he was the junior member there. वो बहुत junior थे. उनके सबसे छोटे उनके वालिद साहब हज़रत अब्दुल्लाह उनसे जो सबसे छोटे थे. He was I think 7. तो उनके ये बेटे थे, एक ही बेटा था, तो उनको लोगों ने इतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया. और उस दूसरा बड़ा कारण था वो अपने जो बुजुर्गों का दीन था उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे. तो उस वजह से लोगों ने उनको बहुत टॉर्चर किया, तरह तरह से तंग किया कि इनको हम उनके
जान की धमकी दी, जान से मारने की धमकी दी, ये सब हुआ। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत तंग आ गए, व्हाट शुड बी डन नाउ, क्या किया जाएगा, क्या करेंगे। उन्होंने सबसे पहले उन्होंने 2 जगहों का इंतखाब किया। उन्होंने हिजरत के लिए सोचा कि आई विल माइग्रेट, तो उन्होंने 2 जगहों का इंतखाब किया, जो सबसे पहले ताइफ एंड मदीना। ताइफ उन्होंने इसलिए किया क्योंकि ताइफ उनकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाजहाल था। उन्होंने कहा वी हैव द रिलेशन देयर, हम वहाँ जाएंगे। और वो वहाँ चले गए, लेकिन वहाँ के लोगों ने उनको वेलकम नहीं किया, वहाँ के लोगों ने और ज़्यादा तंग किया, मदीना से ज़्यादा, मक्का शरीफ से ज़्यादा। फिर वो वापस आ गए और फिर उन्होंने मदीना शरीफ में अपना कंसंट्रेशन के वहाँ के लोगों से ही उन्होंने एक लेजान रखा। ये लेजान कैसे रखा उन्होंने, हज के ज़माने में मदीना से जो लोग आते थे वो मक्का शरीफ आते थे, तो मक्का में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मिलते थे, उनसे बातचीत करते थे। तबलीग का काम, दावा का काम जारी था उनका, वो वहाँ पर उनसे दावा का काम करते थे। तो उनसे एक जान पहचान सी हो गई थी। उसके बाद उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावत दी, आप मदीना शरीफ मदीना आ जाइए और हम आपको वहाँ पर पनाह देंगे। इससे हिजरत से पहले 2 साल, हिजरत से 2 साल जो हिस्टोरियन ने लिखा है, सीरत की बुक्स में जो लिखा है, जो इसमें इस डॉक्यूमेंट में नहीं है, इन्होंने एक जिक्र किया है लेकिन बैकग्राउंड नहीं दिया है। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि हिजरत से 2-3 साल पहले जो हाजी आते थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौसम पर, जो दैट इज बिटवीन मदीना एंड मक्का, द प्लेस इज नोन एज अकबा। बेसिकली वो एक पहाड़ी है, तो वहाँ 2 पहाड़ियों के बीच की जगह है, वहाँ पर इन लोगों की मीटिंग हुई पहले साल। तो उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी, आप आ जाइए, वी विल प्रोवाइड यू एवरी प्रोटेक्शन। और वो लोग वहाँ पर दीन फैल गया था, वहाँ पर कुछ लोग जो मुसलमान हो गए वही हज के लिए आ रहे थे। तो फिर दूसरे साल भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ अकबा के मुकाम पर उनसे मिलने गए। वहाँ से काफी लोग आए थे, 15 कुछ सीरत की बुक्स में है, कुछ 12 लोग आए थे और उनमें लेडीज भी थी। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी बातचीत हुई तो एक बैयत हुई। बैयत मीन्स एक प्लेज ऑफ अकबा जिसको कहते हैं। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे फरमाया कि आप हमारे यहाँ आ जाइए, और उन्होंने एक प्लेज जो है ड्रॉ किया, हमें क्या क्या वहाँ करना है। डॉक्यूमेंट को आप दिखा दीजिए। 5 पॉइंट्स उन्होंने आपस में, वो 5 पॉइंट्स की बात हुई जो बाद में जिसको टेक अप किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। नंबर 1, डेफिनेशन ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, हिज ओन एज वेल एज दोज ऑफ लोकल इनहैबिटेंट्स। जब वो जाएंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके जाएंगे, तो वहाँ फर्स्ट चीज क्या होगी, डेफिनेशन ऑफ द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। लोग जो जाए हम और जहाँ हम जाएंगे, उन लोगों की ड्यूटीज और उन लोगों के ऑब्लिगेशंस और राइट्स क्या होंगे वो मेंशन हो जाएंगे। कि हम ऐसे नहीं आएंगे, पहले हम देखेंगे हमें आप लोग क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि उस वक्त सबसे बड़ा मसला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये था कि जितने भी लोग निकलेंगे, जितने भी लोग माइग्रेट करेंगे, वो अपनी सारी प्रॉपर्टी पीछे छोड़ देंगे, उनको रोजगार कैसे मिलेगा, वो क्या करेंगे वहाँ। और अगर हमें मदीना के लोग इस वक्त वेलकम कर रहे हैं, ये एक इनके साथ माहदा होना चाहिए जिसको कहते हैं प्लेज ऑफ अकबा के मुकाम पर हुआ था। दूसरा ये था अरेंजमेंट फॉर द सेटलमेंट लाइवलीहुड ऑफ द मक्कन रिफ्यूजीज। जो मक्का के रिफ्यूजी, जो बाद में डॉक्यूमेंट में वो लिखा हुआ है, जिस मिसाक में लिखा हुआ है, दोज आर द महाजिरीन, जिनको महाजिरीन कहा जाता, उनके साथ क्या सलूक किया जाए, अरेंजमेंट फॉर उनको कैसे सेटल करेंगे, वो कहाँ रहेंगे, किस तरह रहेंगे। थर्ड बात, एंड अंडरस्टैंडिंग विद द नॉन मुस्लिम्स ऑफ द सिटी, पर्टिकुलरली द जूस। कि उस वक्त ये मैं इसके बाद बताऊंगी, उस वक्त जो एथनिक ग्रुप जो मदीना में रहते थे, वो डिफरेंट तरह के लोग थे। आइडोलेटर्स भी थे, उसमें ज्यूज भी थे, उसमें मुस्लिम्स भी। और मुस्लिम्स की जो पॉपुलेशन थी, नंबर था, वो बहुत कम था। तो तीनों के कि हम उनके साथ किस तरह रहेंगे, तीनों एथनिक ग्रुप्स के साथ हम किस तरह रहेंगे। एंड अंडरस्टैंडिंग विद द नॉन मुस्लिम्स ऑफ द सिटी, पर्टिकुलरली ज्यूज, उनके साथ हमें क्या करना है वो
हमें कैसे ट्रीट करेंगे, अरेंजमेंट फॉर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड मिलिट्री डिफेंस ऑफ द स्टेट, और अपने जहाँ पर हम रहेंगे उसका बचाव हमें किस तरह करना। हम तो वहाँ आएंगे लेकिन हम कैसे आप लोगों से मिलके हमें ये सारा सेटल करना है। कंपनसेशन ऑफ द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी सफर्ड बाय द रेफ्यूजीज एट द हैंड्स ऑफ द कुरैश ऑफ मक्का। जो हम लोग जो आएंगे और जो मुहाजिरीन वहाँ पहुँचे हैं या आएंगे तो उनके साथ उनको जो लॉस हुआ है वो कैसे करेंगे, वो कैसे हम उनको कंपनसेट आप लोग करेंगे। तो उस तरह से यही एक प्लस हुआ। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली हिजरी उसमें जो हिजरत कर लिए तो वहीं से स्टार्ट होती है, हिजरी का साल जो है वहीं से शुरू हो जाता है हिजरत। व्हेन ही माइग्रेटेड, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक माइग्रेशन जब माइग्रेट कर रहे हैं वो इन लोगों की यकीन दहानियों पर उन्होंने मदीना को चुना। इन चीज़ों की यकीन दहानियों पर वो वहाँ पहुँच गए। और वो पता है इधर से जब मक्का में जो लोग हिजरत पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की थी, बहुत सारे लोग वहाँ पहुँच गए थे मदीना। तो उन्होंने ये सोचा कि ये वहाँ पर मदीना पहुँचकर हम पर हमला करने वाले हैं। तो उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का पूरा सीज किया कि इनको बाहर नहीं निकालने देंगे। तो लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का बचाव, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ वो निकल गए, वो वहाँ पहुँचे। उसको भी डिटेल में नहीं बताऊंगी कैसे, क्योंकि टाइम इतना नहीं है। तो वो मदीना पहुँच गए और मदीना में उस वक्त यहाँ पर हमीदुल्लाह साहब ने तीन चीज़ों मक्का शरीफ का वो बताया है। मक्का का कंपैरिजन और मदीना का कंपैरिजन किया है कि मदीना किस तरह की मदीना में किस तरह की सिचुएशन थी और मक्का किस तरह का शहर था उस वक्त। उन्होंने कहा मक्का फिर भी एक उसमें बड़े बड़े कबीले थे, जिसमें कुरैश सबसे बड़ा कबीला था, बट इट वाज ऑर्गेनाइज्ड वार, उसमें ऑर्गेनाइजेशन थी और उसमें रेवेन्यू का अपने अपने जो उनके जो महकमा ही हम कहेंगे, रेवेन्यू का काम भी हो रहा था, टेम्पल का काम, मक्का शरीफ उस वक्त वो, और वहाँ पर लोग आते थे हज के लिए, उसकी इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा थी। लोग फिर ये फिर भी ऑर्गेनाइज्ड स्टेट थी उस वक्त मक्का। लेकिन मदीना तो ट्राइबल सोसाइटी थी, जिसमें डिफरेंट तरह के ट्राइबल्स रहते थे, जिनमें आइडोलेटर्स थे और जिनमें ज्यूज भी थे। तो वो एक छोटे सा शहर था, शहर भी नहीं, एक जगह थी जिसमें ये लोग रहते थे। इनके अपने ट्राइब्स के रूल थे, हर ट्राइब का अपना अपना सरदार होता था, उनके अपने रूल्स थे और इनमें खाना जंगी थी। मतलब आपस में बेसिकली हमीदुल्लाह साहब ने यहाँ उस एथनिसिटी का इस तरह से जिक्र किया है। देयर वर two groups, उन्होंने दिया there were three groups। नंबर वन जो उन्होंने नाम दिया है अरब्स, दूसरा उन्होंने दिया है ज्यूज और तीसरा दिया है उन्होंने द मुस्लिम्स हु माइग्रेटेड, जो पहले उनकी तादाद बहुत कम थी जो मदीना पहुंच गए थे। उन्होंने इन तीन का जिक्र किया है। उसमें वो कहते हैं अरब्स एंड ज्यूज। अगर जब हम इसको अगर हम एनालाइज करेंगे तो ज्यूज भी दे वर आल्सो द नेटिव्स ऑफ दैट प्लेस, वो भी बेसिकली अरब थे। अगर उनकी एथनिसिटी हम देखेंगे वो तो वही के रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने इसको डिफरेंशिएट किया है। फिर हमने कुछ सीरत की बुक से उसकी एक्सप्लेनेशन देखी, व्हाट इज दिस अरब्स एंड दिस ज्यूज। तो उसमें ये पता चला कि एंशिएंट अरब वाज डिवाइडेड इनटू बिफोर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इट वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अरबियन पेनिनसुला जो है तो ये दो हिस्सों में डिवाइड था, नॉर्दर्न अरब एंड सॉदर्न अरब। सॉदर्न अरब जिसमें यमन वगैरह है वो उस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ एरिया था, प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता था, वहाँ कैनाल्स थी, बहुत कैनाल्स थी जिनसे वहाँ प्रोडक्शन बहुत होता था, वहाँ के लोग बहुत खुशहाल थे। उसके बाद वहाँ का मेन जो इरिगेशन सिस्टम दैट कोलैप्स्ड,
وہ ختم ہو گیا اور وہاں پر لوگ قحط سے مرنے شروع ہو گئے, وہاں کی حالت بہت خراب ہو گئی. جو ناردرن پارٹ تھا اٹ واز ہیونگ اے پیور کریکٹر آف ڈیزرٹ, تو ساؤدرن پارٹ بہت ہی خوشحال تھا. وہاں سے لوگ مائگریٹ کر گئے اور مینلی وہ مدینہ شریف پہ بس گئے. جب وہ نکل گئے اس قحط سے بچنے کے لیے, اور اس کو انہوں نے ان کو کہا ہے عربس. they were from basically from the یمن سے وہ لوگ تھے, وہ یہاں بس گئے تھے. اور ان میں بھی they were idolaters also and Jews also. اور Jews جو تھے مین, ان کے اپنے قبیلے الگ تھے. ان لوگوں کے جو عربس تھے, جو انہوں نے کہا ہے عربس اینڈ جوز کے اپنے قبیلے تھے 10 قبیلے 10 ٹرائبس. اور جو دوسرا گروپ جن کو وہ عربس کہتے ہیں وہ تھے, وہ بیسیکلی آئیڈولیٹرز تھے پہلے. تو وہاں وہ 12 ٹرائبس میں بٹے ہوئے تھے. اور پھر مسلم جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے بھی, اور پھر یہ کام دعویٰ کا کام چل رہا تھا. تو اس میں جتنے بھی قبیلے تھے جو مسلمز کے قبیلے تھے, ان میں مین قبیلے 2 قبیلے تھے, اوس اینڈ خزرج. ایک قبیلے کا بہت بڑا قبیلہ تھا اور دوسرا تھا خزرج. اور ان میں کے پھر سب برانچز تھی, ان کے جو شجر دیکھتے ہیں نا ان کا سیرت کی بکس میں ہے, ان کے پھر ڈفرنٹ اور سب برانچز تھی. پہلے 5 برانچز تھی, کعب, عمر, عوف, جشم اینڈ حارث. بنو حارث جن کو یہ بنو عمر کہتے ہیں, بنو عوف کہتے ہیں, بنو جشم اینڈ بنو حارث. ان کے بھی سب برانچز تھی. تو یہاں پر اس طرح سے 12, کیونکہ یہ آگے ہمیں اس میں ڈاکیومنٹ میں یہ سارا درج ہے, وہ وہاں پر ہمیں اس کی جانکاری کے لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے. اور اسی طرح جو ان کے جوز کے قبیلے تھے, ان کے لیے مین تھے بنو نذیر اینڈ بنو قریظہ. اور ایک تیسرا بھی تھا ان کا بنو قینقاع. یہ 3 قبیلے تھے ان کے, اور ان کے 12 قبیلے تھے. یہاں ان کے بھی 10 قبیلے تھے, 10 میں یہ 3 مین ہیں, پھر ان کی سب برانچز تھی. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف آ گئے تو انہوں نے وہاں پر ایک جو اپنے اس کے مطابق جو انہوں نے پہلے بات کی تھی, تو انہوں نے ایک ان 3 گروپس کے ساتھ ایک مسلموں کے وہ خود سردار تھے, تو جو باقی وہاں کے 3 گروپس تھے ان کے ساتھ انہوں نے ایک ڈاکیومنٹ, ایک معاہدہ کیا, بھائی ہم کیسے رہیں گے, تم لوگ کیسے رہو گے, کیسے ہم ایک یونٹی کے ساتھ. سو ہی گیو دا کنسیپٹ آف ون رولر اینڈ ون لا. وہ یہ چاہتے تھے کہ دنیا کے مسلمان جو بھی یہ فیتھ ایکسیپٹ کریں گے تو وہ ایک جھنڈے تلے سب رہیں گے. تو اس پر انہوں نے وہ ایک ڈاکیومنٹ تیار کیا. سب کے 12 ان کے جو جتنے بھی قبیلے تھے عربس کے, ان کے 12 جو ہیڈز تھے, ان سے انہوں نے سب سے مشورہ کر کے اس وقت وہ لوگ, اب ہم یہ سوچیں گے کوشچن ارائزز کہ کیسے مدینہ کے لوگوں نے اتنی جلدی آپ کے لیڈرشپ کو ایکسیپٹ کیا. ایکچولی کیا تھا, مدینہ اس وقت ایک ٹرائبل ایریا تھا, اور وہاں جو ٹرائب تھے ان کے 12 ٹرائب تھے, جوز کے 10 ٹرائب تھے, ان کی سب برانچز تھی. وہ آپس میں جوز آپس میں بھی لڑتے تھے, باقی عربس اپنے آپس میں لڑتے تھے, دونوں پھر آپس میں لڑتے تھے. یہ لوگ اس وقت چاہیے تنگ آ چکے, 20 لاکھ پاپولیشن تھی. They were thinking of some peace. وہ چاہتے تھے چاہے ہم لوگ مدینہ کے مکہ کے قریش کے سے ہم مدد دیں گے تاکہ ہم پیسفلی رہ سکیں گے. انہوں نے یہ سارا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو ایک نعمت سمجھا اور انہوں نے ایکسیپٹ کیا اس وقت, کیونکہ ملک کے حالات ایسے تھے. انہوں نے ایک یہ بھی ذکر کیا ہے, there was a person, حمید اللہ صاحب نے اسی زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے تھوڑا پہلے there was a person from خزرج قبیلہ سے تھے, ان کا نام تھا عبداللہ بن عبید ابن سلول. انہوں نے اس کو کنگ بنانا چاہا, بٹ لیکن سیرت کی بکوں میں لکھا ہے وہ بہت منافق انسان تھے. باقی اپنا قبیلہ تو ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار تھا, لیکن باقی قبیلے ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, اور اس وجہ سے
वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद को उस वक्त एक नियामत समझते थे कि वो हम उनसे बच गए, बल्कि उसके लिए अब्दुल्लाह बिन उबय के लिए क्राउन भी तैयार हो गया था, लेकिन वो फिर किंग बना नहीं। तो ये जो डॉक्यूमेंट बना है जिसको हमीदुल्लाह साहब ने कहा दिस द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है किताब और सहीफा। सहीफा भी मीन्स बुक रिटन, और किताब का मानी ये है, उन्होंने डिटेल दी है कि अरबिक में किताब रिटन चीज को कहते हैं, सो इट इज द रिटन थिंग इन द वर्ल्ड, फर्स्ट रिटन थिंग। उन्होंने कुछ हमें रेफरेंस दी है, वो अरबी का कुछ रेफरेंसेस दिए हैं उन्होंने। ये जो इसमें कुरान शरीफ में इन्ना सलात कानत अल मुमिनीना किताबन मौकूता, सूरह निसा का ये वर्स है, वेरी प्रेयर इज अ टाइम्ड ऑर्डिनेंस। नमाज जो है वो टाइम्ड ऑर्डिनेंस है, वक्त पर हमें अदा करना फॉर द बिलीवर्स। यहाँ ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस का मतलब है इधर लिखा है अरबिक में किताबन, किताबन मौकूता, तो दैट मीन्स अरबिक में रिटन चीज को जो कहीं पर दर्ज किया गया हुआ है, चाहे वो नमाज का बयान है, चाहे वो रोज़ों का बयान है, इट इज नोन एज किताब। सो दिस इज द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले और कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था जो रिटन फॉर्म में था, उन्होंने इस चीज को जस्टिफाई किया एंड फिर उन्होंने दिया है कि इन दिस document Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam secured for himself the highest judicial, legislative, military and executive powers। इस ये डॉक्यूमेंट जो बना, इसके फीचर्स को इसके बाद भी बता दूंगी। तो यहाँ पर हर चीज डॉक्यूमेंट किया गया, हर चीज की को लिखा गया, हर एक के राइट। एक पहले यहाँ पर जस्टिस का कंसेप्ट मिलता है, जब हम इस डॉक्यूमेंट को जस्टिस, हर इंडिविजुअल के डिग्निफाइड होने का सबूत मिलता है इससे, क्योंकि हर एक के यहाँ पर हर एक के का जिक्र है इसमें, हर इंडिविजुअल है, हर ग्रुप का इसमें जिक्र है। तो इस तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वहाँ तक रेवलेशन हुआ था, जितना भी वही आया था, उस वक्त तक कभी ज़कात और हज का नहीं हुआ था शुरू अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्यूमेंट, बल्कि किबला अवल उस वक्त बिल्कुल फाइनल था और नमाज लोग पढ़ते थे। तो उन्होंने इस्लामिक प्रिंसिपल्स पर जितना उस वक्त तक रिवील हुआ था, उन्होंने उस पर ये डॉक्यूमेंट बेस किया है। उसमें नॉन मुस्लिम थे, नॉन मुस्लिम भी थे, उसमें ज्यूज भी थे, उनके अलग राइट्स थे। अगर वो मुसलमान या हमारी फेथ को एक्सेप्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते वो अपने रिलीजन पर रहे, उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। या जो दूसरी तरह के दूसरे इनसे ज्यूज के अलावा जो मुस्लिम नहीं हुए थे, दूसरे अरब पॉपुलेशन भी थी जो जिनका फेथ डिफरेंट था, तो उनके साथ भी कोशिश की दावा का काम उनको अपने फोल्ड में लाया जाए, लेकिन जो खुद आना चाहता है, खुशी से आना चाहता है, अदरवाइज उन्होंने किसी के साथ ज्यादती नहीं की। और उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस डॉक्यूमेंट में लिखा है, साहब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था इसको लिखने के लिए, इस डॉक्यूमेंट को। क्यों? उसमें ये सीरत की बुक से हमें मिलता था, दिस वाज द टाइम जब वही नाजिल होता था और सहाबे के बाद जो तादाद में बहुत कम थे, तो वो उस वक्त कुरान शरीफ को लिखने में मसरूफ थे, उसको डॉक्यूमेंट करने में, जो भी उस वक्त का तरीका था उसको करने में मसरूफ थे। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसको डॉक्यूमेंट किया, इसको लिखा। तो अरब जो मदीना की स्टेट थी, वो पहली ऐसी स्टेट बन गई जहाँ पर इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हो गया। तो इसके बाद अब इस डॉक्यूमेंट के स्पेशल फीचर्स हम बता देंगे। इसमें 53 जिस तरह बिल्कुल एक लीगल डॉक्यूमेंट होता था, हैविंग द सेक्शन डॉक्यूमेंट है, उसके बाद सेक्शंस है जिसमें सब कुछ दर्ज है, और इसमें 53 सेक्शंस है। लेकिन हमीदुल्लाह साहब ने अपनी बुक में इसको 47 बनाया है। उन्होंने है तो इसमें सारे, लेकिन 47 इसलिए है कि उन्होंने
کچھ کو اے بی کر کے ڈالا ہے, مطلب سب ہیڈنگ کا, سب کلاس, کلاسز اینڈ سب کلاس, تو اس میں انہوں نے اس طرح سے ڈالا ہے. تو جو اس میں دو پارٹس ہے. فرسٹ پارٹ ہے فرام فرسٹ ٹو 1 to 23 کلاس, 1 to 23. اس میں انہوں نے جو فرسٹ 23 ہے, جو باقی سیرت کی بکس ہے ان میں ہے 1 to 25, 1 to 23. اور لیکن انہوں نے بیچ میں ایک دو جو کلاس ہے ان کے دو سب کلاسز دے دیے ہیں, یہ بھی 25 ہو جاتا ہے, مگر نمبرنگ 1 to 23 ہے, بیچ میں وہ سب کلاس ہے اے اینڈ بی. دوسرا پارٹ اس کا ہے فرام 23, 24 to 47, جو انہوں نے دے دیا حمید اللہ صاحب نے. تو وہ اس میں بھی پھر سب کلاسز ہے, وہ بھی ٹوٹل یہ دونوں ملا کے ایک ہے 1 to 23, بیچ میں دو سب کلاسز ہے, 25 ہو رہا ہے وہ. دوسرا ہے پھر وہ ہے بیسکلی 25, مگر انہوں نے اس کے سب کلاسز بنا کے دیٹ بیکمز 28 and 25 یہ ٹوٹل کلاسز ہو رہے ہیں 53. تو اٹ از ہیونگ 53 sections اور the 53 classes. اب ہے جو پارٹ فرسٹ ہے 1 to 23 اکارڈنگ ٹو حمید اللہ صاحب, وہ ہے اس میں رائٹس, اوبلیگیشنز, ایوری تھنگ ریگارڈنگ دا immigrants of the Quraysh, immigrants of the Meccan immigrants and of the Ansar. Ansar means the helpers who were present in the, who were in Madinites جو ہے, جو مدینہ کے رہنے والے ہیں, جو انصار کے جنہوں نے ہیلپ کی مسلمانوں کی, جنہوں نے مہاجرین کی ہیلپ کی, ان کے بارے میں زیادہ ہے, انہیں دو گروپس کے بارے میں زیادہ ہے. اور دوسرے پارٹ میں جوز کے بارے میں ہے. اس میں جو ایک انالیسس آ رہی ہے, وائی از لائک اس کا جو بیسیکلی اس کا ریزن کیا ہے. اس میں جو محدثین, مورخین اینڈ ہسٹورین جو اس پر جو کمنٹری لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دس واز وین حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے اسٹیبلشڈ his power in the holy city of Madina. تو انہوں نے کیا کیا, لوگ جو مہاجر اور انصار تھے, جو اس وقت انصار, یہ بعد میں ان کو نام دیا انہوں نے, جو امیگرینٹس تھے مکہ شریف کے اور وہاں کے رہنے والے جو تھے, مدینہ کے عرب پاپولیشن تھی, جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی, انہوں نے ایکسیپٹ کیا. انہوں نے لے لی کیونکہ وہ تنگ آ چکے تھے کھانا چنگیوں سے, واقعی انڈیویژل سے وہ تنگ آ چکے تھے. لیکن جو وہاں کی پاپولیشن تھی, جو پاپولیشن تھی, وہ they were hesitant. How can we accept a newcomer جو ابھی نیا آیا ہے, کچھ دن پہلے آیا ہے, ہم ان کو کیسے ایکسیپٹ کریں گے. انہوں نے انیشل سٹیج میں فرسٹ ہجری میں, فرسٹ ایئر کا جو ہجری کا فرسٹ ایئر تھا, انہوں نے اس میں یہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا بائی ہارٹ. اس لیے ان کا اس میں کوئی ذکر ہے کہ انہوں نے ایکسیپٹ شاید نہیں کیا ہوگا اس ڈاکیومنٹ کا پارٹ بننے کے لیے. تو اس کے بعد اس میں جو انالیسس اس کی جو کمنٹری ہے وہ یہ ہے کہ سیکنڈ ہجری میں بیٹل آف بدر تھی. تو بدر کی جو لڑائی تھی, دیٹ واز اے ڈیسائڈنگ فیکٹر. تو اس میں مسلمانوں کی زبردست جیت ہو گئی, اور اس میں جو ان کا پاور تھا یا انٹرنل جو بھی اپنا ٹرائبل پاور ان کا جوز تھا, وہ کمزور پڑ گیا. ان کو اب لگا کہ اب ہمیں ان کے ساتھ چلنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. وی ہیو ٹو ایکسیپٹ دس اتھارٹی آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں ان کو. پھر اس کے بعد دوسری ہجری انہوں نے لکھا ہے کہ سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ رہا ہوگا سیکنڈ ہجری میں, سیکنڈ ایئر آف ہجری میں اس کو ڈاکیومنٹ کیا ہوگا, کیونکہ اس میں صرف جتنے بھی جو ٹرائبس ہیں, جو ہے, ان کے بارے میں, ان کے ساتھ ہمیں کیسے چلنا ہے, وہ ہمارے ساتھ کیسے چلیں گے. تو یہ اس میں درج ہے. اب ہم اس کو ڈسکس کریں گے ون بائی ون. اس میں جو ایک فیچر تھا اس کا مدینہ کی سوسائٹی کا, جو پہلے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت نہیں کیا تھا تھے ابھی, ان کا ایک فیچر تھا عربس were there and the Jews were there. عربس میں بھی بہت سارے جوز تھے جنہوں نے اس مذہب کو اپنایا تھا. لیکن یہ کیا کرتے ہیں, اگر کوئی ان پر حملہ کرتا تھا, انہوں نے ڈفرینٹ ٹرائبس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا کہ اگر
زمانے میں آپ لوگوں کا ہمیں ساتھ دینا ہے, ہم بھی آپ کی مصیبت میں جب بھی کوئی وقت خراب پڑے گا ہم آپ کی ہیلپ کر دیں گے. تو اس ایتھنکسٹی کے ڈفرینٹ ویری پاپولیشن کے باوجود بھی یہ اب ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے تھے. ڈفرینٹ ڈائیورسفائڈ ریلیجنس کے لوگ تھے, لیکن یہ آپس میں ان کا اس طرح کا مادہ اعزاز تھا, یہ اس طرح کرتے تھے اور یہی آگے بھی کنٹینیو ہو گیا. پھر جب یہ ڈاکیومنٹ جب بن گیا, انہوں نے ایک چھوٹی سی سمری دی ہے حمید اللہ صاحب نے, تو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے پہلے, میں نے اس کو چھوٹے سے اس میں بنا لیا ہے. ان the very first clause, جو پہلا clause ہے, proclamation has been made of the inauguration of an Islamic political unit composed of the refugees of Makkah and the helpers of Madina, جن کا نام مہاجرین اور انصار ہے, and also those others who were willing to take part in wars under the guidance of and in cooperation with this united body of the Muslims of Makkah and Medina. It has been further laid down that this political unit will obey the orders issued by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the messenger of God. It is in clause 1. In the very last sentence of the part of the document which concern Muslims, ہر ڈاکیومنٹ ہر clause کے نیچے لکھا ہوا ہے, this is repeated, that although source of all authority is God himself, yet people will obey the messenger of God, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ان کے رسول ہونے کا, ان کے میسنجر ہونے کا سب کو ایکسیپٹ کرنا تھا. اور جو بھی یہ کلاس بنائے گئے, ان میں جو اس وقت اس میں بات آ گئی, لیکن سب میں یہ لکھا تھا کہ فائنل اتھارٹی از دا میسنجر آف گاڈ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کہیں پر کوئی ڈسپیوٹ ہوا, کچھ بھی ہوا, تو وی ہیو ٹو ریفر ٹو دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے بعد بھی انہوں نے اور بھی کئی چیزیں انہوں نے اس میں دی تھی, لیکن وہ ہمیں آگے اس ڈاکیومنٹ میں ایک ڈاکیومنٹ ہمیں 47 کلاس ہے, ان کو میں 1 by 1 انشاءاللہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گی. Because after all this whole discussion, we have to see the document, what it contains. It contains, in the name of God, the beneficent and the merciful. Bismillahirrahmanirrahim کٹی ہوئی ہے. اس میں نمبر 1 کلاس جو ہے, this is a prescript of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the prophet and messenger of God, to operate between the faithful and the followers of Islam from among the Quraysh and the people of Medina, and those who may be under them may join them and take part in wars in their country. تو جو مکہ سے آنے والے لوگ آئے تھے مسلم, وہ مہاجرین کہلاتے تھے, وہ آگے انہوں نے اس کے بعد آگے انصار اور انصار کا ہیلپرز, پیپل who helped them from Medina itself, جو ان کے ساتھ مل گئے تھے. And this whole, number 2, they shall constitute a separate political unit ummah as distinguished from all the people of the world. تو یہ ساری, چاہے دنیا کا مسلمان کہیں بھی ہے, کہیں بھی وہ اپنا وہ مسلمان ہے, he is included in this ummah. تو یہ انہوں نے ایک بیل ڈال دی اس ڈاکیومنٹ کے تھرو کہ دنیا کا جو ایک یونٹی کا کنسپٹ دے دیا, جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں they are part of this and they are part of this ummah. Number 3, the immigrants from the Quraysh shall be responsible for their own war and shall pay their blood money in mutual collaboration. یہ انہوں نے سمری میں بھی دیا تھا حمید اللہ صاحب نے کہ ایک کلاس بالکل کیئرفلی لکھا ہوا ہے کہ جو مدینہ سے مکہ سے آنے والے مہاجرین, they will be responsible for their own existence. انہیں خود کمانا ہے, انہیں مینز دیکھنے ہیں کیسے, and انصار will help them. انصار نے ان کو, جو مدینہ کے لوگ, ان کو بہت ہیلپ کی. اگر کسی کے پاس 2 باغ تھے, 3 باغ تھے, وہ ان کو کہا آپ ہاتھ انگلی سے دکھا دیجیے آپ کون سا لینا چاہتے ہیں, تو ہم آپ کو دیں. انہوں نے مہاجرین کو کہا, لیکن مہاجرین اتنے ہائی کریکٹر تھے, انہوں نے نہیں, انہوں نے کہا ہمیں صرف راستہ بتا
بتا دیجیے کیسے ہم تجارت کر سکتے ہیں, ہاؤ کین وی ارن آور لائیولیہوڈ, ہم اس طرح سے ایمانداری سے اپنا کام اپنا کما لیں گے. ایون یہ بھی ہوا کہ آپ لوگ اگر جو لوگ سنگل آئے ہیں, اکیلے آئے ہیں, اب جو وہاں پر رواج تھا, بیکاز دیٹ واز دیٹ ٹائپ آف سوسائٹی جہاں 4 بیوے آج بھی وہاں ہے, تو اگر آپ لوگ کسی بھی ہماری زوجات پر ہاتھ اٹھائیں گے کہ ہم ان سے نکاح کریں گے, ہم ول ڈیورس دیم اینڈ یو کین ٹیک, مگر ایسا نہیں ہوا. انہوں نے ایسا نہیں, کیونکہ ان کا بھی کیریکٹر بہت بلند تھا. ایک کچھ کیسز میں ہوا ہوگا لیکن مینلی یہ نہیں ہوا, اور انہوں نے اپنا ایگزسٹنس کی. دوسرا یہ تھا کہ اگر جنگ کرنا پڑا, every unit is responsible for their own expenses. مسلمان اپنے لیے رہیں گے ریسپانسبل, جو یہودی ہوں گے وہ اپنے لیے, ٹرائبل جو بھی ہے وہ اپنے لیے ریسپانسبل ہوں گے, اور اگر ہمیں ان کو ہیلپ کرنی ہے they have to pay the burden, ان کو خرچہ برداشت کرنا ہے. کیونکہ سیرت کی بکس میں لکھا ہوا ہے یہ جو جوز تھے وہ مدینہ کے جو جوز تھے وہ لین دین میں بہت خراب تھے, وہ ان کا لین دین اچھا نہیں تھا, اس وجہ سے یہ ساری چیزیں ڈاکیومنٹ کرنی پڑی. The immigrants from Quraysh shall be responsible for their own ward. They shall pay their own blood money in mutual collaboration and shall secure the release of their own prisoners by paying their ransom from themselves, so that the mutual dealings between the believers be in accordance with the principles of goodness and justice. اب ہے نمبر 4 and Banu Auf. بنو آف جو ہے shall be responsible for their, اور بنو آف جو ان کے دو جو عربs تھے ان کے دو قبیلے تھے مین, اوس اینڈ خزرج. یہ خزرج کا ایک برانچ ہے, یہ بھی یہ عربs کی برانچ ہے. اس میں ہر قبیلے کا لکھا ہوا ہے shall be responsible for their own ward and shall pay their money. بالکل یہ اوپر کا پورا دہرایا گیا ہے, ان کو بھی اپنے ایکسپینسز خود برداشت کرنے ہیں یہاں رہنے کے لیے, تو یہ بنو اوف کے لیے تھے. پھر ہے بنو حری ابن خری الخزرج, یہ بھی خزرج کی برانچ تھی. یہ بنو حارث جس کو آپ کہیں گے shall be responsible for their own ward and shall pay their blood money and mutual collaboration, and every group shall secure the release of its own prisoners. تو ان کے لیے بھی یہی کنڈیشن تھی. اس کے بعد نمبر 6 میں بنو سیدہ بھی ایک برانچ ہے خزرج کی, ان کے لیے بھی یہی انسٹرکشنز تھی. تو الگ الگ ہر قبیلے ہر برانچ کے لیے یہ انسٹرکشن ہے. بنو جشم shall be responsible, یہ بھی خزرج کی برانچ ہے, ان کو بھی اپنے لین دین کے لیے خود ریسپانسبل رہنا پڑے گا, اور وار کے ٹائم بھی انہیں ہمیں اپنے پرزنرز کو انہیں خود پے کرنا ہے. پھر ہے اینڈ بنو نجار بھی سب برانچ ہے خزرج کی, یہ بھی ان کا بھی یہی تھا. تو پھر دوسرا ہے بنو عمر بھی ان کی ہی برانچ ہے. تو یہ یہاں پر 12 تک 11 تک ڈفرینٹ جو گروپس ہیں, ان کے جو قبیلے ہیں جو ٹرائبس ہیں ان کے بارے میں سارا یہ ہے کہ ان کو یہ سب کرنا ہے, مگر الگ الگ سب کے نام لکھے ہیں. نمبر 10 ہے بنو النبی, یہ اوس کی برانچ ہے. اوس اور خزرج مین دو برانچز ہیں, یہ اوس کی برانچ ہے. They are also responsible for their own expenses. پھر ہے دوسرا ہے بنو اوس, ان کا بھی یہ 11 تک ڈفرینٹ کو مینشن کیا گیا ہے, 11 کلاس تک ان کو یہ برداشت کرنا ہے. پھر ہے 12 and the believer shall not leave anyone hard pressed with debts without affording him some relief, in order to that the dealings between the believers be in accordance with the principles of goodness and justice. اگر کوئی غریب ہے یا کوئی ابھی وہ کچھ کام نہیں کر رہا ہے, ان پر آپ پریس نہیں کر سکتے ہیں کہ اس کو دینا ہی دینا ہے, اس کو مل کر پھر ہم سپورٹ کریں گے. بلیورز کے لیے ہے, جو مسلمان ہو چکے تھے ان کو ہم یہ سارا ان کو ہم ہیلپ کر لیں گے, تاکہ our religion is based on goodness and justice, تاکہ ہم وہ پریکٹیکلی پروو کریں گے we are with them at the time of their hardships.
फिर इसके 12 के एक और क्लास है, इसमें 2 क्लास है, ए ये है, बी है. Also no believer shall enter into a contract or planet with one who is already in such a. अगर कोई बिलीवर मुसलमान जो है, अगर वो किसी के साथ उसने ऑलरेडी कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, वो दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है. तो इसलिए ये सारी चीजें यहाँ क्लियर होनी चाहिए. नंबर 13, and the hands of pious believers shall be raised against every such person as rises in rebellion or attempts to acquire anything by force and guilty of any sin or excess or attempts to spread mischief among the believers, their hands shall be raised. जो इनका इसका मतलब है कि जो हमारे नेक जो सहाबी थे, जो पहले जो मुसलमान हो गए थे, जो इनका अमल जो अमलन बहुत नेक थे, तो अगर उन्होंने देखा किसी को वो गलत वो इस कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट कर रहा है या किसी को तंग कर रहा है या किसी को परेशान कर रहा है सोसाइटी में, उनके खिलाफ उन्हें आवाज उठानी है ताकि एक जस्ट सोसाइटी की प्रैक्टिकली बुनियाद पड़ सके. 14, and no believer shall kill another believer in retaliation for an unbeliever, nor shall he help an unbeliever against a believer. Now 15, and the protection of God is one. The humblest of them, believers can, by extending His protection to anyone, put the obligation on all, and the believers are brothers to one another as against all the people of the world. 16, and that those who will obey us among the Jews will have helped the equality, neither shall they be oppressed, nor will any help be given against them. Number 17, and the peace of the believer shall be one. If there be any war in the way of God, no believer shall be under any peace with the enemy apart from other believers, unless this peace be the same and equally binding on all. तो ये इसमें वो यूनिवर्सलिटी की बात थी कि जो हर एक के साथ भलाई और हर एक को जस्टिस मिलनी चाहिए. 18, and all those detachments that will fight on our side will be relieved by turns. ये आगे भी हमको इतराज मिलेगा कि जो हमें हेल्प करेंगे, जो लोग हेल्प करेंगे उनको हमें टर्न बाय टर्न पर उनकी सर्विसेज लेनी है. उनको बॉन्डेड लेबर की तरह नहीं, बिल्कुल बेसिस ऑफ जस्टिस उनको हम उनकी सर्विसेज, एक ग्रुप आएगा वो उनको एक टाइम, उसके बाद उनको रिलीव करके दूसरा डिटैचमेंट आएगा उनको रिलीव करके, इस तरह से ये हमें काम आगे बढ़ाना है. 19, and the believers as a body shall take blood vengeance in the way of God. And फिर है 20 भी 2 क्लास में डिवाइडेड है, सब क्लास में. A, and undoubtedly wise believers are the best and in the rightest course. अभी है and that no, ये जो 19 है इसमें जहाद का तस्वुर है कि हर एक को जो भी बिलीवर है जब भी जरूरत पड़े उनको अल्लाह की राह में जहाद के लिए निकलना है. And undoubtedly wise believers are the best and in the rightest course. We have and that no associator, non-Muslim subject shall give any protection to the life and property of a Qurayshite. अगर कुरैश चाहेंगे हमें शेल्टर मिलना चाहिए या उनको कोई हेल्प मिलनी चाहिए, ना मुस्लिम की तो बात नहीं है, बिलीवर्स की बात नहीं है, लेकिन जो नॉन बिलीवर्स है, जो इस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, वो उनको बिल्कुल शेल्टर नहीं देंगे. Nor shall he come in the way of any believer in this matter. 21, and if anyone intentionally murders a believer and it is proved, he shall be killed in retaliation unless the heir of the murdered person be satisfied with blood money. And all believers shall actually stand for this ordinance, and nothing else shall be proper for them to do. 22, and it shall not be lawful for anyone who has agreed to carry out the provision
provision laid down in this code and has affixed his faith in God and day of judgment to give help or protection to any murderer. And if he gives any help or protection to such a person, God's curse and wrath shall be on him on the day of judgment, and no money or compensation shall be accepted from such a person. 23. And that whatever you differ about anything, refer it to the God and to the Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because it's the final authority. उनसे फिर हमें उसमें मशवरा लेना है. ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें सिर्फ डिफरेंट ट्राइब्स जो अरब जो मदीना के लोग थे या जो महाजरीन थे अंसार थे उनके बारे में रूल्स एंड रेगुलेशंस ले डाउन है. अब ये 24 है, ये शुरू हो जाता है जूस के बारे में. And the Jews shall share with the believers the expenses of war so long as they fight in conjunction. अगर वो हमें उनके साथ लड़ना है या उन्हें लड़ना, हम उनको हेल्प करेंगे, they have to pay their share of expenses. Number 5. And the Jews, अब यहाँ पर Jews के जो ये ट्राइब्स है उनका जिक्र है. And the Jews are born out, क्योंकि इन अरब कबीलों में भी जू थे तो ये उनके बारे में, और जनरल जू जो आउटसाइड दिस फोल्ड थे उनके बारे में. And the Jews of Bonaparte shall be considered as one political community, ummah, along with the believers. For the Jews their religion, and for the Muslims theirs. Be one client or patron. तो अपने अपने मजहब पर कायम रहते हुए ये एक उम्मत भी करते हैं. They are helping us. तो उसमें अगर कोई गुलाम है वो भी उसको भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए. अगर उसका मास्टर है उसको भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए. Who is guilty of operation or breach of treaty shall suffer the resultant trouble as also his family, but no one beside. जो इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा, इस डॉक्यूमेंट को वायलेट करने की कोशिश करेगा, उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने हैं. Number 26. And the Jews of Banu Najjar shall have the same rights as the Jews of Banu Auf. जो इनके आपस के कबीले हैं उनमें कोई फर्क नहीं है. They have the same rights. And the Jews of Banu Haris shall have the same rights. ये भी इन्हीं के बारे में. And the Jews of Banu Seda shall have the same rights as the Jews of Banu Auf. तो ये जूस के जो डिफरेंट कबीले हैं उन पर ये लागू होता है. 29. And the Jews of Banu Jasham shall have the same rights as the Jews of Banu Auf. And number 30. And the Jews of Banu Aus have the same rights as the Jews of Banu Aus. ये Aus and Auf तो दोनों के same rights हैं. And the Jews of Banu Salaba shall have, ये Jews के tribe है, Jews of Banu Salaba shall have the same rights as that of Banu Auf. Of course, whoever is found guilty of operation or violation of treaty shall himself suffer the consequent trouble, and also his family, but no one besides. 32. And Japhna, it is also a tribe who are a branch of the Banu Salaba tribe shall have the same rights as the mother tribe. जो branches है इनके, जो different tribes है, सब branches है, उनके भी वही rights and duties होंगी जो इनके parent tribes के लिए. And Banu Shuteba shall have the same rights as the Jews of Banu Auf, and they shall be faithful to and not to violators of treaty. Number 34. It is about the slaves. And the Mawlas means Ghulam, of Saleba shall have the same rights as those of the original members of it. Number 35. And the sub-branches of the Jewish tribe shall have the same rights as the mother tribes. 36 is divided into two. Number 8. And that none of them shall go out to fight as a soldier of the Muslim army without the permission of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And no obstruction shall be placed in the way of anyone, retaliation for beating or injuries, and whoever sheds blood shall be personally responsible for it.
as well as his family, or else any step beyond this will be of operation, and God will be with him who will most faithfully follow this code of Sahifa. यहाँ पर इसको फिर mention है in action. 37. And the Jews shall bear the burden of their expenses and the Muslims theirs. And this economic factor, this is quite clear. लेन देन क्या रहेगा? लेन देन in society, social aspect, economic aspect, political aspect, everything is clear in this document. 37a. And the Jews shall bear the burden of their expenses and Muslims their. B. And if anyone fights against the people of this code, the Jews, either Jews or Muslims, mutual help shall come into operation, and there shall be friendly counsel and sincere behavior between them, and faithfulness and no breach of covenant. आपस में ही सुलह सफाई से उनको इसको हल करना है और इस एग्रीमेंट को के अगेंस्ट नहीं जाना है. 38. And the Jews shall be bearing their own expenses so long as they shall be fighting in conjunction with the believers. 39. And the valley of Yasrab. Madina का ancient name जो था that was Yasrab. Yasrab shall be haram, sacred place for the people of this code. जो इसके सिग्नेटरी है या जो इसके मेन मानने वाले हैं, वो मदीना जो है नाउ यसरब, ये अब सैक्रेड सिटी और हरम का हरम मीन्स को दर्जा मिला है. Number 40. Clients means slave shall have the same treatment as the original persons. He shall neither be harmed nor shall be himself, nor he shall himself break the covenant. 41. Covenant means this contract. And no refuge shall be given to anyone without the permission of the people of the place. The refugee shall have no right of giving refuge to others. कोई अगर आता कहीं से कि मैं आपके साथ, जो रिफ्यूजी से महाजरीन है, मैं आपके साथ रहूंगा, आपके साथ काम करूंगा, तो इस कॉन्ट्रैक्ट में है कि रिफ्यूजी दूसरे को नहीं रिफ्यूज कर सकता है. जिस तरह हम देखते हैं ना, हम छुपा के रखते हैं लोगों को, लेकिन इसमें ये क्लियर मैसेज थी, रिफ्यूजी जो है जो ऑलरेडी मदीना में है, वो किसी और को विदाउट द परमिशन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को रिफ्यूज नहीं दे सकता. 42. And that if any murder or severe takes place among the people of this code, from which any trouble may be feared, it shall be referred to God and God's messenger sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and God will be with him he will be most particular about what is written in this code and act on it most faithfully. Number 43. To Quraysh shall be given no protection, nor shall they who have them. 44. And they mean Jews and Muslims, shall have each other's help in the event of anyone invading their. 45a. If they, the Jews, are invited to any peace, they also shall offer peace and shall be a party to it. And if they invite believers to some such affairs, it shall be theirs, there will be Muslims' duty, as well as to reciprocate the dealings, excepting that anyone makes a religious vow. इसका भी है, all every group shall rest the responsibility of the enemy from the place which faces it is part of the city. 46. And the Jews of the tribe of Al-Aus, clients, slaves as well as original members, shall have the same rights as the people of this code and shall behave sincerely and faithfully towards the latter, not perpetuating in breach of covenant. As one shall sow, so shall he reap. And God is with him who will most sincerely and faithfully carry out the provisions of this code. And this number 47. This prescription not be of any avail to any oppressor or breaker of covenant, and one shall have security whether one goes out to campaign or remains in Medina, or else it will be an operation and breach of covenant. And God is the protector of him who performs the obligation with faithfulness. And here
as also his messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So this is all about, these are the all clause of this document. So in this way we have seen there is everything, there is mention of every citizen, whether it is believer or non-believer, whether it is Muhajir or Ansar, or whether it is Jew, belonging to any tribe, whether it is a slave or a master. So in reality it is a code of action. It is a code of action and chart of duties. Thank you, sir. मिलत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।